Chinmay, next please. So the language courses are very less in the amount, like only 1500 rupees if you get it 50% off, right? And the domain courses, this is for the mostly of third year and second year, like blockchain full stack. When you are going into a segregated field of your interest, then you can pick these courses. And if you are on your basic level, then you can pick any language you want. और दिस आपका एडवांटेज क्या होगा इसमें अगर मैं आपको काउंट कराऊं फर्स्ट थिंग कि आप जब कॉलेज से फॉर एग्जांपल आते हो आप अपना एक टाइम वेस्ट करते हो आप एक चीज फाइंड आउट करते हो आपके पास प्रॉपर रोड मैप नहीं होता तो आप बहुत अलग अलग जगह पे सेग्रीगेट हो जाते हो राइट तो उन सारी चीजों के लिए एक पर्टिकुलर रोड मैप है जिसमें आप किसी भी एक कोर्स को लो आप उस पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करो इंडस्ट्री रेडी बनो एंड व्हाट these courses assure you is that an internship अगर आप कोई भी कोर्स करते हो एट द एंड ऑफ द कोर्स इफ यू हैव 70% अटेंडेंस एंड देयर विल बी अ माइनर टेस्ट if you pass the test then what I can assure you is that you will have an internship you will be ahead of your colleagues of your batchmates right who are already like learning from XYZ elsewhere, but you will have a developed roadmap. Next is these are the two industry courses. These are the two industry courses, right? Data analysis and business specialist. As you also know that these are the currently the most trending courses in the market because web development and all that things you also know that the market is flooded with it but if you want to go aside from that what you can choose is data analyst is one of the most beginner friendly as well as one of the most industry ready course next please now what the benefits will you get from it like we will provide you with the complete notes like you have not to prepare any notes yourself. We will provide you with a complete note that is an industry ready. Like you can read it after also the your final year, right? Hands-on project will be built as I already told 90% will be the practical part. Future roadmap will be your assistance, like what I told you about the internship opportunity based on the performance, right? We will also provide you with the internship and the placement support. One-on-one support will be the doubt solving and the mentorship round, right? In that, in between any session, it will be a completely live session. It will not be recorded session. So अगर आपको डाउट भी आ रहा है किसी चीज में तो आप उस मेंटर से डायरेक्टली बात कर सकते हो आप अपना डाउट क्वेरीज डायरेक्टली रेज कर सकते हो इट्स अ कंप्लीट वन ऑन वन इंटरेक्शन फ्लेक्सिबल टाइमिंग ये वाला जो पार्ट है ये आपके लिए इसलिए रखा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमने एक बैच रख दिया राइट तो उस बैच के अंदर इसको क्या आएगा कि कोई टाइम है कोई टाइम है हमने वो रख दिया नाउ उस टाइम आपका कॉलेज है आप फ्लेक्सिबल नहीं हो उस टाइम पे राइट देन व्हाट वी कैन डू इज यू कैन पिक योर स्लॉट योरसेल्फ लाइक वीक में इतने दिन मैं इस टाइम पे क्लासेस लूंगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट योर course can be shifted right then after that completion you will get a certificate of completion for each language or project or the market domain you have picked right with that also you will get the internship support from the next year solution as well so at the end of third year like most of the yes no Tejinder Pal Singh the classes will be virtual but it will be live classes it will not be recorded like you will get the access to the recorded classes later on but most of the time it will be the live classes right it will be one on one interactive session. And for the offline classes, we have centers, so you can apply to that. But for your like flexibility, we have chosen the virtual method, right? Virtual and it will be an one-on-one session. तो अगर आपने कभी कोई क्लास मिस कर दी then we can provide you with the recording and XYZ things. But what हमारा क्या है बट उसमें हमारा ये रहता है कि
अगर आपने कोई डोमेन कोई भी लैंग्वेज चूज करी है, तो अगर उसका फॉर एग्जांपल 4 वीक्स ड्यूरेशन है एंड वी हैव डिवाइडेड एज 2 आवर्स पर डे फॉर अ वीक, तो हम चाहते हैं कि उस वीक में अगर आप उस प्रैक्टिकल चीज को सीख रहे हो तो एट द एंड ऑफ द वीक यू मेक अ मिनी प्रोजेक्ट, एंड दैट एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक यू मेक अनदर प्रोजेक्ट। सो ये सब करके जब फाइनल आपका कोर्स का completion टाइम होगा, that time you will make a major project that will be an industry ready project that you can put out in your resume also, right? Any more doubts and queries from anyone? So guys, just please pay attention. No, sir. Uh, yes, that 70% thing for the online attendance is considered for the internship purpose, right? If you don't want an internship and you just want to learn from the course, yes, you can learn it. But if you want an internship after that, at least minimum of 70% your attendance should be there, and a mini test will be there what you have learned through the course. On that basis, multiple students are selected further for the internship process, right? Next, please. Back, please. So, guys, you already talked with Mr. Jasuraj Kumar, right? So, these are some of his detail. Like you, he is very familiar to you, right? He is from Mathematicity, right? Uh, so you can directly for any question queries you can contact him, right? Next, please, guys. This is a form. Kindly scan it and fill it, right? If you are attending this session, so kindly fill this form. And if you want to take interest in that courses and thing, then I will share a form with you right now, and you can fill it, or I will share in the group also. You can fill that form, and the regarding details will be shared to you on the email. Okay. Next, please. Okay, okay. I will share a link on the WhatsApp group, right? So don't worry about that. So guys, many of you have queries like कि जो हमें सर्टिफिकेट्स मिलेंगे तो वो कौन से होंगे, क्या वो इंडस्ट्री में एक्सेप्टेबल होंगे, राइट? तो वो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स होंगे, एआईसीटी अप्रूव सर्टिफिकेट्स होंगे, जो आप अपने रिज्यूमे में भी लगा सकते हो, आप उसको अपने एक्सपीरियंस में भी शो कर सकते हो, राइट? तो उस चीज के लिए मत रहना कि ये भी ऐसा ही कोई कोर्स है कि जो हम फिर रिज्यूमे में नहीं लगा सकते ये कंपनी। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज एन इंडस्ट्री रेडी कंपनी, इट्स रजिस्टर्ड कंपनी, राइट? सो जो सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड होगा दैट विल बी गवर्नमेंट वेरीफाइड, सो डोंट वरी अबाउट दैट। Guys, let me get you a brief about every courses like we have. So it will be a little bit lengthy, but bear with me, right? So many of you, next please. Okay. So many of you have interest in web development, right? Uh, like I am also from the web D background. Like I have completed the web D thing. Okay. And I am currently working in the industry, right? So this course is designed in that way, like what I told you earlier. So in the first, the foundation, HTML structure, the basic things, the simple basic things, so that even a person who doesn't know coding will understand how to do it, right? Then the second module will be the design part. Third will be interactive part. And then after these three modules will be completed, there will be a mini project that you have to complete based on these three features, right? The three modules, foundation, design, and interactivity. Based on these features,
there will be a mini project. On that completion, then we will proceed to the next module, that will be the backend. That will also take that will also take a little bit time, and will now for the fourth, fifth, and sixth module, right? There will be a particular single project for that. Like after the backend completion, there will be project. After the data part, there will be a project, and the final there will be your overall knowledge tested, and a project will be given to you. And on the completion of that project, you will be given the certificate of the course completion, right? Next, please. Next, 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 next. So guys, these are the like basic modules that will be that you will study in the course if you pick it, right? So you can read it alone. This will be also be shared in the groups, like exact modules who will pick out, like for example, I have selected the web development and I have filled out the form with my email. So your email will be shared with all the details around it, right? Next, please. Now for the data science, like this is the one of the like trendiest thing in the market currently, right? Many of the people currently in the market who are not in the development field are in the data science field, right? What in the data science field, what you will next, please. Right. So how many of you are interested in the data science field? Anyone can be interactive, right? Yes, unknown, Mr. Unknown. Yes, laptops are mandatory as you will be doing all the projects and everything on the laptop, right? So yeah, laptops will be mandatory. Any more doubts and queries? Guys, don't be shy. आप ये तो माइक ओपन करके बोल रहे हो, चैट्स पे डाल दो. लेट मेक इट इंटरेक्टिव. ऐसे आप चुप चुप रहेंगे, मैं पीपीटी शेयर करता रहूंगा, तो यू विल बी ऑल्सो बोर्ड, राइट? Okay. So in the data science, what you will be getting in the foundation, you will be learning the Python programming and the core libraries like the pandas, numpy. Like these are the two of the most trendiest things like that are in the market for the ML part and the data science part, right? Then in like I already said, you will learn pandas. Then for the ML part, you will do the data analysis part and build machine learning models. How many of you have heard about LLMs? Okay, so no response. No worries. So yeah, I got a response. Yes. LLMs are large language models. Like they are used to build a basic development AI, right? Many of you know. So like the Chat GPT, द मोस्ट ट्रेंडिएस्ट वन. लाइक एवरीवन, अगर किसी को भी मैं पूछूं कि कोई भी एक एआई का नाम लो, दे से द चैट जीपीटी. चैट जीपीटी इज एन एआई एप्लीकेशन, नॉट एन एग्जैक्ट एआई. तो वो एलएलएम्स पे यूज करता है, जो उसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, उस डेटा को वो एक्सेस लेता है, देन उसमें वो सर्च आपका क्वेरी को करता है, देन इट प्रोवाइड्स यू विद एन आंसर, राइट? तो अगर कोई आपसे पूछे कि हाँ कोई एआई का आप बोलो, या फिर एलएलएम्स क्या होता है, तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आपके अभी कंफ्यूजन है, राइट? तो उस चीजों को, वो जो बेसिक चीजें हैं, वही इंटरव्यूअर भी पूछता है आपसे, राइट? तो इन्हीं बेसिक चीजों को आपको इंडस्ट्री रेडी करने के लिए वी हैव प्रोवाइडेड विद दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट प्लीज. दिस इज द कंप्लीट सी प्लस प्लस कोर्स, लाइक फॉर द, अगर आपको बेसिक्स नहीं आते, लाइक यू आर अ बिगनर,
from first year and you want to learn how to code in any language. So the basics that industry demands is C or C++. Like for these things, these are the low level language that like clears your mind about how the syntax works, how the fundamentals of coding works. Okay. Next is next. Uh yes. So here you can see there are four modules: the function overloading, default arguments, recursion techniques, and header files. So these four modules consist of another more modules that you will be learning in the C++, right? And this will clear and give you a clarity about the C++ programming, right? So I don't think I have to like share more about the C++. As I know that most of you have an experience in coding, right? Now for the data analyst and business analyst thing, right? So I already told you about the data analyst thing, right? In that, what you will get a hands-on experience is the Excel, SQL, that's a database querying, right? Visualization, the most important part, and the Python programming, which just starts your ML part as well as the data engineering part, where you will be learning NumPy, data, and the pandas. You will be knowing how to do the analysis with the data. If I have given you a set of data and I tell you to find XYZ things or a amount, so you can't directly search, filter, and find it, right? There are some particular code to do it, some particular command, because across a lakhs of data, you can't directly analyze it on your simple machine. There are some codes to do it, right? And at the end of this also you can see the real world project. So it doesn't mean like a simple project we will build, right? Every single individual students have a different project built, right? And that will be an industry ready project that will be according to the practical scenarios and the professional challenges that came in the market, right? Next please. Like the Excel thing, the SQL thing. Next please. SQL thing in which you will getting the basic queries. Next, please, data visualization. That is the part, and the most important part, which is I am start saying from the starting the Python, pandas, and the NumPy. Pandas and NumPy are the some libraries that are most trending in the market currently of the Python. Right? Many of you know. How many of you know about the Python language itself? Okay, I see some people know it. Great. So, like the Pandas library is used for the data manipulation and the analysis, right? And the NumPy is for the numerical computing, right? And all the operations regarding the numbers. The NumPy is the best library of the Python that you can use to do it, and it's currently being updated across each versions. So it also becomes very easier to use and it can be become very beginner friendly if you can use it very efficient way, right? Next please. Next. And yes, the main part. So some of you, चलो मैं ही स्विच करता हूँ लैंग्वेज. अब आपको इतनी देर से लग रहा होगा कि मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो अगर किसी को उसमें भी क्वेरीज थी तो वो अभी भी पूछ सकता है. हिंदी में भी हम बात कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है, राइट? तो द थिंग इज कि कोर्सेज जो है दे आर इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, राइट? एंड व्हाई वी प्रेफर द हिंदी लैंग्वेज बिकॉज हमारे जो फर्स्ट टंग है, फर्स्ट लैंग्वेज है, वो हिंदी है, राइट? एंड व्हेन आपको अगर उसी लैंग्वेज में हम क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं कोई चीज को, अगर मैं भी अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको वो समझ आ रही है. बट वहीं मैं अगर फ्लुएंट इंग्लिश में स्विच कर जाता हूँ तो कुछ चीजें हैं जो मिस कम्युनिकेट हो जाती है, राइट? सो फॉर दैट हम हिंदी में भी कोर्सेज को प्रेफर करते हैं, बट इफ यू वांट कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, दैट लैंग्वेज इज प्रेफरेबल.
सो उसका कोई इशू नहीं। और आपको किसी को भी ये नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे नहीं आती इंग्लिश, मुझे हिंदी आती है, मुझे हिंदी आती है और फिर मैं दूसरी लैंग्वेज में नहीं कर सकता। तो वो बात नहीं है। ओवर द टाइम यू विल ऑल्सो डेवलप दिस, राइट। आप जब ट्रेनिंग करोगे, आप जब दूसरों से इंटरेक्ट करोगे, राइट, देन यू कैन ऑल्सो कम्युनिकेट इन इंग्लिश। लाइक फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल इज मी माई सेल्फ। मैंने कहीं से इंग्लिश सीखी नहीं। जब मैंने कम्युनिकेट करा लोगों से, जब मैंने दूसरी इंडस्ट्री में लोगों से कम्युनिकेट करा, माई इंग्लिश ऑटोमेटिकली बिकेम बेटर, राइट। नेक्स्ट प्लीज। एंड एज ऑलरेडी मेंशन, लाइक कि कोई भी कोर्सेज आप अगर करते हो, like there will be a internship provided with you along that after a 70% attendance and a mini quiz criteria. For that, you have to attend 70% of the classes. That will be most of the classes will be live. And for your flexibility, some classes recordings can be provided to you which you have missed. Right. Next, please. Okay. So from the cyber security, okay. How many of you are interested in the cyber security field? Like I see from many colleges, people from different domains are switching to cyber security because it's an okay course duration. The course duration varies from 4 weeks to 12 weeks depending on the course you choose, right? Mr. Unknown, okay, whatever your name is. Course duration is between 4 weeks to 12 weeks, depending on the course you pick. For example, अगर मैंने सी का कोर्स चूज करा, ओके, तो उसको 12 वीक्स तक खींचने की कोई नीड नहीं है क्योंकि उसमें ऐसा उतना कुछ है नहीं इन डेप्थ जाने के लिए। तो वो हम 4 वीक्स में कवर कर सकते हैं। बट फॉर अ ब्लॉकचेन और अ डेटा एनालिसिस कोर्स, उसको हम 12 वीक्स तक स्ट्रेच कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मॉड्यूल्स एंड एवरीथिंग, राइट। नेक्स्ट प्लीज। So another what extra domain from the market we are providing is the cyber security part, right? तो अगर किसी को साइबर सिक्योरिटी करना है तो उसके लिए हमें एक एक्स वाई जी अमाउंट ऑफ ऑडियंस चाहिए कि हाँ आपका इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी में, देन वी कैन प्रोवाइड यू। सो लाइक दिस इज वन प्लस कोर्स। लाइक जो बाकी सारे कोर्सेज हैं यू हैव सीन इन द प्रीवियस स्लाइड्स आल्सो, like they are mentioned there, but this is not mentioned. Why? Because this is the premium course, right? Not with the amount of fees and that thing, but the contents and the end of it, the support of the job thing, right? So the cyber security thing, the cyber security course is a premium thing. Next, please. So these are the some basic things that will be taught from basic to advanced, the network security and firewalls. Next, please. So there are three parts, right? Like first one is the red team, second one is the blue team, and third one is the purple team. So how many of you know what the red team, blue team, and purple team does? Anyone has any idea? Okay, I see one response. Ritik, Tejin, Kripal. Right. Okay. So मैं एक बेसिक सा अगर आपको ब्रीफ दे दूं, so red team are the attackers team, like they attack। अगर सिंपल टर्म्स में आपको बोलूं, फॉर एग्जांपल आई एम इन अ रेड टीम एंड यू आर अ कंपनी, सो आई टेस्ट योर सर्वर्स, राइट, आई डू द पेनिट्रेशन टेस्टिंग, आई डू ऑल द एक्सप्लॉइटेशन थिंग एंड देन रिपोर्ट इट, लाइक व्हाट आर द बग्स, व्हाट आर द fixes to do. And in the blue team it's the defensive side. When an cyber security attack happens to your company, right, or any company, they have a section of blue teams that defend that attack. Like for example, the top beginner role for that code, that blue team is SOC analyst, that is security operations center analyst. Like they defend the attack, they prepare a report about.
about it and how they can defend in future, how that attack should never happen in future. They prepare a detailed report about it. So these are the two parts. And now you will be thinking what the purple team. Purple team क्या करती है? So it's a combination of both red and blue team. वो उन दोनों टीम से कोऑर्डिनेट करती है. देन अगर वो अटैक वाला पार्ट है तो उसके अंदर भी इंडल्ज होती है. देन वो डिफेंड वाला पार्ट है उसके अंदर भी इंडल्ज होती है. एंड दे ऑपरेट बोथ द टीम्स रेड एंड ब्लू टीम्स, राइट. नेक्स्ट पेज. लाइक जैसे कि मैंने अभी आपको ब्रीफ दिया, रेड ब्लू एंड पर्पल टीम, दीज आर जस्ट द बेसिक सिंपल टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी. आई थिंक आप में से कईयों को पर्पल टीम के बारे में नहीं पता होगा, बिकॉज रेड एंड ब्लू आपको हर कोर्सेज में या फिर हर यूट्यूब में बताए जाते हैं. देयर आर टू टीम्स, रेड एंड ब्लू. द थर्ड वन इज द मेन टीम, दैट पर्पल, दैट ऑपरेट्स बोथ द टीम, राइट. Now, cryptography and encryption. You see your WhatsApp, you are sending any message. So how no one else is able to read that message on his or her device? Why? Because of the encryption thing, right? You have seen a message in the WhatsApp end-to-end encrypted, right? So that means when I send a message, it doesn't deliver in that format only. It converts into an encryption, right? And then when it's द डिजायर्ड यूजर, जैसे मैंने अगर आपको सेंड करा, राइट. अगर मेरे पास कोई मैसेज है और मैंने एग्जांपल आपको हेलो कर, तो वो हेलो आपके थ्रू पास जब जाएगा तो वो नेटवर्क के ऊपर हेलो की तरह नहीं जाएगा. वो कन्वर्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ फॉर एग्जांपल DYBV के एक एनक्रिप्शन की के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा. जब मेरा डिजायर्ड यूजर है, फॉर एग्जांपल आप हो, आप तक वो मैसेज रिसीव हुआ, तब वो आपके डिवाइस जो टारगेट डिवाइस है उसमें जाके वो डिक्रिप्ट होता है. एंड देन दैट की इज कन्वर्टेड टू HELLO, हेलो, जो मैसेज मेरा डिजायर्ड था, राइट. सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ क्रिप्टोग्राफी एंड एनक्रिप्शन. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. So, like I already told you about the blue team, so incident response and forensics are part of the blue team, where they have to defend and make report about what the incident has occurred and do the forensics part, right? कि अगर ये अटैक हुआ, ये कहाँ से हुआ, उसको बैक ट्रैक करना, फिर उसके एग्जैक्ट जो डैमेजेस उस अटैक ने करे उसको रिकवर करना. तो ये सारा पार्ट होता है ब्लू टीम का, जिसके अंदर इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड फोरेंसिक्स का काम होता है. नेक्स्ट प्लीज. ओके. सो व्हाट थर्ड थिंग हियर एडेड यू कैन सी इज, फर्स्ट, द रेगुलेटरी कंप्लायंस, कि मार्केट के स्टैंडर्ड्स. लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी मार्केट में साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट कौन सा है, अगर आप गूगल भी करते हो, राइट, तो सबसे पहला क्या आता है? CE, दैट सर्टिफाइड एथिकल हैकर फ्रॉम EC2 सर्टिफिकेशन, राइट. तो जो CEH का सर्टिफिकेट है ना, दैट्स आउटडेटेड. ठीक है, अगर आप मार्केट में भी अभी किसी से भी पूछोगे तो वो आपको कहेगा CEH का कर ले ब्रो, एंड आफ्टर CEH यू विल बी अ सर्टिफाइड एथिकल हैकर. बट जो CEH का पेपर होता है, दैट्स 90% थ्योरी पेपर, राइट. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव अटेम्प्टेड इट. सो इट्स अ थ्योरी पेपर. यस. एंड अगर आप कभी डीप रिसर्च में गए या आपको करना है, देन यू विल नो देयर आर मल्टीपल पेपर्स लाइक OSCP, OSINT का पेपर होता है, सिक्योरिटी प्लस, नेटवर्क प्लस. दीज आर सम सर्टिफिकेशन जो अभी मार्केट रेडी है, जो मार्केट में डिमांड है. अगर आप अभी लिंक्डइन पे अपने फोन पे खोलो ना, एंड यू जस्ट सर्च साइबर सिक्योरिटी जॉब, एंड उसके नीचे रिक्वायरमेंट्स में जाओगे, वहाँ आपको दो ही मेजर सर्टिफिकेट दिखेंगे, जो कि है सिक्योरिटी प्लस एंड नेटवर्क प्लस. और अगर आप पेन टेस्टिंग या फिर रेड टीम्स की साइड वाली जॉब्स पे जाओगे तो OSCP मांगते हैं. बट जो OSCP का सर्टिफिकेट होता है वो 1 लाख प्लस का होता है, राइट. जो सिक्योरिटी प्लस का होता है वो 20,000 प्लस का होता है, नेटवर्क प्लस का 15,000 प्लस का होता है. दीज आर द कोर्सेज जो मतलब मार्केट में अगर आप देखोगे, तो अगर आप खुद से करने जाओगे तो फर्स्टली इनके जो मॉड्यूल्स है वो भी आपको खरीदना पड़ते हैं, राइट. देन उन मॉड्यूल्स को खरीदने के बाद भी आपको वो पेपर जब आप क्रैक कर लेते हो,
तब भी मार्केट के अंदर जॉब गारंटी नहीं है साइबर सिक्योरिटी की, राइट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं इंडस्ट्री का हूँ, मुझे पता है। मैं मार्केट में जब कनेक्ट करता हूँ ना, देयर आर फ्रेशर्स स्टिल, लाइक जो बैठे हुए हैं कि हमने कोर्स कर लिया बट हमें कंपनी हायर नहीं कर, क्यों? क्योंकि जो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था वो उन कोर्सेज में था ही नहीं। सर्टिफिकेट और प्रैक्टिकल नॉलेज दो अलग चीज है। सिर्फ सर्टिफिकेट अगर आपने सिक्योरिटी प्लस का कर लिया, इट डजेंट मीन कि आपको वो स्किल आती है, राइट। कंपनी के अंदर जब रियल लाइफ में आप काम करते हो तो बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट प्लीज। तो मैं जो कह रहा था साइबर सिक्योरिटी के अंदर, उस जो कोर्स है, अगर आप उसको इस एंड से करते हो स्टार्टिंग से कि लाइक नहीं, अगर आपको है कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही जॉब चाहिए, राइट, एंड यू आर विद द माइंडसेट कि नहीं मुझे एथिकल हैकिंग ही करनी है या फिर मुझे ब्लू टीम में ही जाना है, मुझे साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में ही करना है। So what we can guarantee you that after taking the cyber security course from us and after giving the certification exam from us only, we will provide you with the job security in the field of cyber security, right? जो आप अगर अभी गूगल भी कर लोगे ना, यूडेमी या फिर कोई और भी कंपनी, like they are providing just the theory courses and no one is taking the responsibility of your placement. So after completion of that cyber security course ना, what we are doing is taking your job security. Like कि उसके बाद इंटर्नशिप हम आपको लगा के देंगे, देन इंटर्नशिप के ऊपर आप जो परफॉर्मेंस दोगे उसके ऊपर आपकी जॉब गारंटी है, राइट। जो मार्केट के अंदर दूसरे किसी कोर्सेज के अंदर नहीं होगी, दैट आई कैन मेक श्योर, राइट। दिस इज अनदर पाइथन कोर्स, राइट। इसका भी मेरे को बेसिक्स लगभग बताने का जरूरत नहीं, बिकॉज एज मैनी ऑफ यू ऑल नो, दिस इज द मोस्ट इंडस्ट्री रेडी थिंग, राइट। अगर आप अभी भी मार्केट में पाइथन के ऊपर, पाइथन डेवलपर के रोल के ऊपर जाते हैं, सो पाइथन इज इन लाइक एवरीथिंग। डेटा की कोई फील्ड में जाओ, बिजनेस के किसी फील्ड में जाओ, हर चीज में पाइथन अभी यूज हो ही रही है, राइट। तो अगर इफ यू जस्ट नो द पाइथन लैंग्वेज, यू कैन चूज अक्रॉस मैनी फील्ड्स, कि आप डेटा की फील्ड में भी जा सकते हो, आप बिजनेस एनालिस्ट के फील्ड में भी जा सकते हो, राइट। सो पाइथन इज दैट मॉडर्न ट्रेंडिंग लैंग्वेज विद many libraries and many functionalities, right? Next please. Next please. Okay, so the four basic modules in which we have divided it is the object oriented programming modules, classes and objects, inheritance. Like these are the basic modules you have also studied in your course curriculum, but here what will be the different part is that all the modules will be a practical aspect also, right? Next please. Okay, next please. Okay, so what will be the advanced topic is the pipelines thing, right? Multi-threading thing, the regex and exceptions. आपने बहुत लोगों ने अपने कोर्सेज में एक्सेप्शंस भी पढ़े होंगे, राइट। बट उसका जो पर्टिकुलर बेसिक यूज है वो आपके कोर्सेज में स्किप भी करा दिया जाता है, राइट। बट जो एक्सेप्शंस एंड रेगेक्स का बेसिक यूज है जो इंडस्ट्री में होता है, उन चीजों के ऊपर जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है वो बताए जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। मार्केट में अभी ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग चल ही रहा है, आपको पता ही है। बिना ऑटोमेशन के आप कोई काम कर ही नहीं सकते हो। अगर आप बेसिक एक टेलीग्राम बॉट भी बनाते हो या एन एजेंट्स भी बनाते हो, तो उसके लिए भी एक ऑटोमेशन लगती है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो here are some listed projects that will be real life projects that are taken as an example। जरूरी नहीं है कि वही प्रोजेक्ट आपको दिए जाएंगे। सो स्टॉक ट्रैकर, जो अभी मार्केट में स्टॉक चलते हैं, अगर किसी को इंटरेस्ट हो वो देखते हैं कि अप डाउन जो उसके अंदर होता है, इंस्टेंट मार्केट में रेडी हो जाता है, वो इंस्टेंट मार्केट में उसका स्टेटस आ जाता है।
हर चीज में ऑटोमेशन का यूज होता है, हर चीज में विजुअलाइजेशन का यूज होता है, राइट। फिर चैटबॉट अगर आप बनाते हो, कोई भी यूट्यूब का ट्यूटोरियल देख के भी बनाते हो, तो उसके अगर कभी आपने देखा होगा कि उसके अगर पीछे जाने का कोशिश करा होगा कि वो बना कैसे, देन यू नो कि एनएलपी का यूज होता है उसके अंदर, राइट। देन गेम डेवलपमेंट के अंदर भी पाइथन यूज करते हैं। पाई गेम जो एक लाइब्रेरी है, उससे हम गेम्स बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो दीज आर सम कोर्सेज, राइट। अब इसके ऊपर है कि आपको कौन सा कोर्स चूज करना है। इट्स नॉट कि हम आपसे पैसा ले रहे हैं, हम प्रॉफिट कर रहे हैं, नो। इट्स जस्ट दैट Hackers Unity is a non-profitable organization and we are associated with them. So we are providing all our courses at a 50% discount for the guys who are going through Hackers Unity, right? मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, एंड यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और अगर किसी को आपको लगे कि हाँ हम कर सकते हैं ये कोर्स, बिकॉज इतना मैं आपसे गारंटी कर सकता हूँ कि दिस कोर्सेज आर द मार्केट रेडी कोर्सेज। ओके, तो अगर सी प्लस प्लस का भी कोर्स है ना, फॉर एग्जाम्पल, जो मतलब मुझे तो नहीं लगता कोई करेगा, बट अगर करता है तो सी प्लस प्लस का भी जो कोर्स है ना, वो इतना एडवांस है ना कि आपको डे वन पे ये नहीं बताएंगे कि हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ लगाओ और ये कर लो। जो हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ की पीछे की स्टैंडिंग है, बिट स्लैश नेम स्पेस डॉट एस टी डी की जो स्टैंडिंग है, वो बताई जाएंगी, बेसिक चीजें बताई जाएंगी। यू कैन स्कैन दिस क्यूआर एंड फिल द फॉर्म फॉर ज्वाइनिंग द कोर्सेज, राइट। और अगर किसी को कोई भी डाउट्स या क्वेरीज, वो अभी चैट में रेज कर सकता है, माइक ओपन कर सकता है। आइदर यूनिटी वाला जो ग्रुप है उसके अंदर आप अपनी क्वेरीज आफ्टर द इवेंट रेज कर सकते हैं, बट इट्स प्रेफरेबल कि आप अभी अपनी क्वेरीज रेज करें, राइट। लेट्स मेक इट इंटरेक्टेबल गाइस, कि आप सिर्फ सुन रहे हैं तो उसका मेक्स नो सेंस। ऑल क्लियर। I got it from Ritik Sharma. Yeah, I am spelling it correct. Guys, I am from the industry, so अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो इंडस्ट्री से रिलेटेड, प्लेसमेंट, जॉब्स, इंटर्नशिप्स, XYZ एनीथिंग, वो यहाँ पे पूछ सकता है। इट्स जस्ट अ नॉर्मल सेशन, ये वो नहीं है। डोंट बी लाइक कि मुझे कोई डाउट आ रहा है, इट वुड बी सिली। नथिंग इज सिली। द फर्स्ट रूल इज ऑफ आस्किंग डाउट, नथिंग इज सिली। कैन टू स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम वन कोर्स? No unknown. So, like the one course module is particularly designed for you. Like for example, you have choose 5 to 6 timings evening for 8 weeks course, for example, right? So that will be your particular customized account. You can use, and all the courses are affordable. I think 1500 is not that much. I think अगर आप बाहर भी जाते हो अभी, ठीक है, तो आपको जो मार्केट में दूसरे कोर्स से मिलेंगे, दैट आर 5000, 6000, 7000। यूडेमी पे दैट्स आर रिकॉर्डेड क्लासेस। मेक्स नो सेंस फॉर मी। लाइक मैं अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं ये कोर्सेज से हट के पर्सपेक्टिव से बोलूँ ना, आप किसी भी कोर्स पे भी जाना जो फ्री में भी हो, उससे पढ़ना 10 to 20 मिनट्स, एंड यू विल सी, और फिर हमसे पढ़ना, राइट। You will see the difference because from the day one we are focused on the practical part, not कि हम आपको थ्योरी बताएं कि सी का डेवलपमेंट कहाँ हुआ था, कि किसने बनाया था सी, क्यों बनाया था सी, नो। अब मार्केट में वो चीज नहीं आती यूज, अब ये यूज आती है कि सी का अभी मार्केट में इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे चल रहा है, राइट। सी को आप कैसे यूज कर सकते हो, क्या प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, राइट। किसी और को क्वेरीज है या फिर किसी को कोई डाउट्स है? अननोन, ओके, थैंक्स अननोन। और गाइस, ये जो फॉर्म आपको शेयर करा गया है, इसके अंदर जो भी प्राइसेस है उनके ऊपर 50% डायरेक्टली ऑफ है।
like for 3,000 course, that will be 1,500 for yours if you go through this form only. This form is for you guys only. You are now like joining from hackers unity perspective, right? एंड आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो ये चीज़ सो दैट वो अपना मनी वेस्ट ना करे अदर प्लेसेस पे, राइट? क्योंकि अगर आपको किसी को काउंटर भी करना है ना मेरा पार्ट, यू कैन काउंटर इट। लाइक जो भी मैंने बोला है ना, दैट आर वर्ड टू वर्ड फ्रॉम द इंडस्ट्री मार्केट पर्सपेक्टिव। अगर मैं आपको अभी किसी और कोर्सेज का बोलूँ भी, फॉर एग्जांपल अन अकेडमी, यूडेमी, जो वो कोर्सेज प्रोवाइड भी कर रहे हैं, तो अगर आप वहां से पढ़ते हो ना, एक तो वो रिकॉर्डेड क्लासेस है, आपके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल टाइमिंग नहीं है उसके अंदर, आप उसमें वन टू वन इंटरेक्ट सेशन नहीं कर सकते हो। और जो सबसे बड़ा है वो प्राइस पॉइंट है। लाइक 6,000, हु विल पे 6,000 फॉर लर्न अ सी प्लस प्लस लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज? मेक्स नो सेंस, राइट? फॉर दैट ये क्यूआर आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, राइट? एंड these are all the courses from my side. This is all my time. Thank you guys for listening patiently. Next time, just try to be more interactive. Open your mics. Don't be shy. Okay. I just got three queries from Mr. Unknown, Ritik Sharma, and Tejinder Pal. Yes, right. And one girl was there, Karishma. So these were some people that were interactive throughout the session. And yes, guys, try to be more interactive because market में आप जाओगे तो आप चुप नहीं रह सकते, राइट? अभी से आप प्रैक्टिस करो। My name is AK Sharma. Unknown. Yes, you can tag me in the groups also by the name of AK Sharma. If you have any query, you can shoot me a text. Okay. Thank you. That's my time. Thank you all for that interactive session. Okay, thank you, Amit, for this wonderful session, and thank you all, guys. Like you have like very patiently and listening all the points, whatever things Amit has said right now. It's all up to guys. The fact what we guys are trying just collaborate with different industries, different like colleges, different institute to just provide you all a better quantity as well as quality products, or you can say quality knowledge in terms of technical things. So for that purpose only, it's all up to you guys how you gonna or in even inside you also how you gonna like digest these things. That is also a question. So it's all up to you guys. Okay. Now the main part which you all are waiting till from the start to now. I think very few are left here only. So this will make more easy for me to choose you all in the higher like Hackathon team. That will be like very much easy for me because it's very much sorted because I want genuinely like because the as per the registration process I thought no it will be like very much difficult for me to in the Hackathon team, but now it's very much easy for me. Okay. So guys, there is a one procedure. You all are actually selected in the Hackathon from for the perspective. I just have to check a little bit of knowledge for in to the, whether you can talk or not, whether you can manage the team or not, whether you can organize that like event or not. These are the things, but this we can do for the further any other day. Today I am going to share with you one Google form that is activity form, a small activity from our side. If you have listen carefully with the like whole procedure what I have shared with you all, you could easily crack that questions and all. So Chinmay, just share that Google form link. That not so Google, it's activities link. So just you all just try to solve those questions. It's like MCQ type questions. So whoever got the top three winners, right? Like goodies of Hackers Unity and top three, and top three or top five. I'll select that. I'll provide you one, AI agentic platform subscription. Through that platform, you will be able to get access to prepare yourself for the interview and all. So that will be like more easy for you. It's like a kind of AI platform which gave which subscription I will provide you, right?
So guys, are you guys ready or not? Yes, perfect, Gaurav. Perfect, Tajinder. Okay, guys, I will make sure one thing, guys. You know, if you are a, like a kind of sort of like, okay, चलो guys, मैं इसको हिंदी में एक चीज बोलता हूँ. एक कहावत है गाइस कि अगर तुम ना दो रेस होती है कछुए की और एक खरगोश की. आई थिंक यू ऑल हर्ड अबाउट दिस, राइट? सो अगर तुम जल्दबाजी करने जाओगे ना, तो मे बी हो सकता है कि तुम वो जो रेस है ना वो हार जाओगे बहुत जल्दी, राइट? तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं बोल रहा हूँ इसमें ना तो कुछ ये चीज़ है, बस ये कि अगर खरगोश की तरह तुम भागना चाहोगे, अरे यार मुझे बहुत जल्दी जाना है, बहुत जल्दी चीज़ें करना है, छोड़ो ना यार, इतना टाइम वेस्ट कौन करेगा. सो वो तुम्हारे लिए फायदे की चीज़ नहीं है, समझो वो, समझो तुम्हारे लिए बेकार है. तुम कब वो हार जाओगे रेस तुमको पता भी नहीं चलेगा. एंड दैट्स व्हाट आई एम प्रूविंग हियर. मैं इसलिए पहले ही बोल दिया था, जो लोग इस एंड तक रुकेगा, हायर तो मैं कर ही रहा हूँ, बट द फैक्ट आई एम ऑल्सो गिविंग सम टॉप 3 गुड प्राइज, राइट? सो जो भी अब यहाँ पे इनको तो जरूर मिलेगा, राइट? तुम सबके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा तुम सबको. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लाइक पेशेंस. आज के टाइम पे कैसा है, बच्चों को पेशेंस लेवल नहीं है, बहुत कम है. उनको चाहिए बहुत जल्दी सक्सेस, उनको चाहिए बहुत जल्दी. मुझे इवन कोर्सेज की भी बात करूँ या फिर कोई चीज़ें सीखने की भी बात करूँ, अगर मैं तुमको ये बोल दूँ ना, दो ऑप्शन है, मैं तुमको बोलूँ यार तुम्हारा 3 महीने तक मैं तुमको सिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कि यार चल मैं तुमको 3 महीने तक वेबसाइट डिजाइनिंग सिखाऊंगा, कैसे डिजाइन होता है. और वही चीज़ कोई तुमको ये बोल देगा, अरे सुन, मैं तुझे ना 1 घंटे में पूरी वेबसाइट डिजाइनिंग सिखा दूंगा. सो डेफिनेट सी बात है, मैं 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो सीधा उसके साथ जाएगा, मेरे साथ नहीं आएगा. द रीजन इज कि यार वो जो बंदा है ना, वो बंदा मुझे 1 घंटे में ही सिखा के दे, मतलब 1 घंटे में वेब डेवलपर बन जाऊंगा, वेबसाइट डिजाइनिंग कर सकता हूँ. बट जो इधर मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो इधर नहीं है. क्यों? क्योंकि लोग सोचते नहीं, लोग थोड़ा सा टाइम नहीं लेते डिसीजन लेने में. एंड ये कई जेन्युइन थॉट है जो मैं बता रहा हूँ करने को, प्लीज करना, ट्राई करना, कभी भी जल्दबाजी नहीं करने की. सोचो समझो. ये सोचो कि अगर तुमको कोई जल्दी में या फिर चीजें कर रहा है, या ये चीजें बोल रहा है कि भाई तुरंत मिलनी चाहिए सारी चीजें, दैट डजंट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस. सो मेक श्योर जब भी आप लाइफ में डिसीजन लेते हो, परफेक्ट लो. ट्राई करो सोच के लेने का डिसीजन, एंड परफेक्ट मैनर में लो कि क्वालिटी कहाँ पे बेस्ट मिल रहा है उधर जाओ, राइट? तुम लोगों ने सुना होगा ना, क्वालिटी एश्योरेंस करके एक आजकल वर्ड आता है स्टॉक मार्केटिंग बहुत ज्यादा. तो ऐसा ही कुछ है, ठीक है. सो जस्ट अ सजेशन गाइस. ओके, आई थिंक दिस इज अ लाइक दैट एक्टिविटी फॉर्म. प्लीज स्कैन दिस. We were present here and try to select the right answers, so that you could be the top 3 or top. Okay. And any doubt you can ask me directly, or you can contact to our team anywhere, right? Either on WhatsApp, either on Instagram, either anywhere. Or if even in your college also, if you want to try to just organize any kind of workshops, events, any kind of event, just contact to our team. We will deliver that all the things, whatever things are required to those to just complete those events. Okay. And make sure whatever things I've delivered here till now, QR isn't working. Is it? Okay, let's I also. Okay, hackathons, Tejinder, yeah, definitely. We are organizing like different hackathons also. You already know this, I think so. Because I have said all the things. So if you whatever college like you are attending, in that college, if it's required, yes, I was in JC. Yeah, perfect. So you have seen that how what kind of hackathon we guys are doing. So same, even not same. I have promised also there also, like whatever hackathon we are doing, it's every time we are doing something new for the students, right? Chinmay, make sure QR is going to be work. प्लीज ट्राई करो ऐसा क्यूआर बनाने का जो वर्क करे यार. करवाना है, वर्कशॉप्स करवाने हो, कोई टेक्निकल चीजें कुछ भी करवानी हो, आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कहीं पे ज्वाइन हो हमारी कम्युनिटी के साथ, और डायरेक्टली वहाँ पे कांटेक्ट, आई हैव ज्वाइन, इट्स वर्किंग. ओके, परफेक्ट. थैंक यू तेजिंदर फॉर द कंफर्मेशन. गाइस, इट्स वर्किंग नाउ. सो जस्ट join it fast and start solving the question. And guys, any guys have any kind of doubt, you can ask me, or you can ask to anybody here. And make sure whatever content we have delivered here, like
maybe due to the time scenario, or maybe due to the बहुत लोग जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, बहुत लोगों को जल्दबाजी होती है, सो लोग चले गए हो, तो प्लीज़ ट्राई करना अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करने की चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, वट एवर इन्फॉर्मेशन वी हैव शेयर्ड हियर, राइट, सो दैट विल बी लाइक मोर इजी फॉर यू एज वेल एज योर फ्रेंड ऑल्सो, कि लाइक क्या है ना, लाइफ में अकेले ग्रो नहीं होना चाहिए, साथ में दोस्तों को भी लेके चलो, तो वो ईजी रहता है। अगर कोई ना माने, मैं तो यही करता हूँ गाइस, आप भी कर सकते हो, and your whatever things have covered by Amit is like perfectly helpful for you guys only. It's all up to you where you wanna go, whether you are trying to this thing for the better quality assurance things, or you wanna pay some waste of things. So that's all depend on you guys. Yeah, guys, join the quiz fast, and we're gonna display this all the winners on our social media platform, right? All of the social media platforms, and you all are like hired already, but there is a small procedure, that is a little bit of HR round type. It's in one-to-one personal interview type. It's a short interview. We are not going to ask for lots of technical things. So that is going to be happen in the next week, but I can assure you the site is stuck at get ready. Okay, just wait for a few seconds or few minutes. Try to or refresh it. You will get the correct site. Don't worry. And bef- yeah, so you will get a like one-to-one interview in next week, and you all have to, after that interview, you all will get your offer letter for the 1 month trial, and then after that for the 3 months internship as a core member of Hackathon. Okay. So make sure complete this like quiz, so that you will be able to get top three ranking, and we are going to display this all top three ranking on our social media platform. We're going to provide all the top three winners, strategies of from Hackathon, as well as we also going to provide all the top three winners. As one AI agentic platform is there, that complete subscription coupon. Okay, so these are the things we will provide the winners. I hope you all enjoyed this session, enjoyed this high unity event. Why this initiative we have taken, just because I feel that maybe like guys, मैं भी समझता हूँ, चलो 100 लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा, पता है क्या होता है गाइस, अगर ओके क्या होता है कि अगर मैं 200 बच्चे रजिस्टर करते हैं ना किसी भी चीज़ में, तो आई एम प्रीटी मच श्योर, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग दीज ऑल थिंग्स, कि वो 200 में से ना मेरे को 10 बंदे ही वो मिलते हैं जेन्युइन, जो एक्चुअली करना चाहते हैं. So that I just try to find out those students, not that 200 students, right? Because कैसा होता है, दुनिया ऐसा है, जिधर एक जाएगा उधर सब जाएगा, बट एक्चुअली वो एक कहाँ तक जाएगा, वहां तक जाने के लिए सबको नहीं पता होता कि यार मेरे पास इतना स्टेमिना है, क्या मैं भी जा सकता हूँ क्या उतने दूर तक, वो मुझे फाइंड करना है, वो बेस्ट लोग कौन है, राइट? So for that purpose only, I am continuously organizing different events like workshops. Also, I am going to organize. Why doing we are doing these all things virtual? That also a reason, because right now the scenario is like most of the universities are organizing their own event, own exams. So for that purpose, we are putting this event in an online way. Nothing like any other reasons with it. But in the upcoming months, we are also going to do some offline workshops, hackathons. So stay connected with us. Like you will get some good news also. To organize them different when would the quiz start, sir? Wait. I just have to ask Chinmay. Chinmay, just inform these guys when you're gonna start the quiz. Guys, any doubt related to anything, you can ask me directly here.
One more thing, guys, if your friends are in different colleges also, you can share with them this community name and anything, so that if those guys also want to join here or wanted to do something better or wanted to do some courses or any try to learn any kind of technology and tools, you can share with them also. Okay, and one more thing, especially for the first year guys, you guys have the opportunity to just learn it as much as you can, guys, either to explore in the technical fields or to learn how to organize events and how to participate in these kind of events. Definitely go it, guys, because this is a time which where you can explore yourself. Like from my point of view, मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ, while I was in my first year, it's all about exploring the things, exploring, trying new things, right? And what I even मैं भी यही चीज़ कर रहा था, मैं अपने फर्स्ट ईयर से इवन मैं भी स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर से हैकाथॉन से आना पार्टिसिपेट करना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अगर कोई फर्स्ट ईयर के बच्चे आके पार्टिसिपेट करते हैं हैकाथॉन्स में, वर्कशॉप्स में, सो दैट विल लाइक मोर इजी फॉर यू। Okay, guys, so quiz has been started. So just try to choose a right answer in the quiz, and maybe you would be the top three winners. So we're gonna provide them a good, kind of prizes. Okay. So while it's done, please inform me.
So guys, did you guys done that or not? Just show me the thumbs up if you have done your like quiz. Okay, Ritik has done it, Gaurav done it. Guys, if you done the like quiz, just inform me. Okay, there's confirm. That's it. Perfect. Messed up. Why you have messed up? Guys, do it fast. Like if you have done the like complete that quiz, just inform me here. Some questions timer ran out. Okay, Kaniska done that. Perfect. Chinmay, please show the ranking on the like that's here. Kaniska done. Perfect, guys. Guys, make sure one thing I can assure you, like whoever the winners, like top three or top five, right? That those guys gonna get some good like goodies swacks. Plus that three passes is like very much effective, right? So you can say like for you guys very much useful for you guys that passes. You're gonna use that in a very better manner. Okay, guys, all of you have completed the quiz, I guess so. It, so these are the results on the screen. As you can see, the first ranking is achieved by Gaurav Chaudhary, which Congrats, got Gaurav. 8 out of 10 questions correct. Congrats, Gaurav. You will be getting all the like swacks and goodies. Who's second? Kanishk Jain, 7 out of 10. Perfect, guys. Your accuracy is actually perfect. Yeah. Really And the third person is Ritik Sharma, which was the most interactive guy during my session also. perfect. Congratulations, you all three. And I'm also mentioning all like five. Like I'm going to give you like 10% extra. Like that, I already like I always try to put it here. So that two guys also I'm going to select is that fourth and fifth. So I'm also going to consider Tarsil and Natik, right? eh, as a winner of this event. So we are going to display your names. Please share your details, all the details to Chinmay or any of my team members. They're going to share your like all the things winner of like this event, higher unity event. Make sure you all will be available. And other than that, whatever things have been shared here, please make sure share with your friends also so that they could also get or these kind of platforms help, right? All the best. Have a very good day, and I hope you will get Guys, lots of achievement in your make sure very. कि आपने वो फॉर्म भर दिया हो जिसमें रजिस्ट्रेशन लिंक आ रहा था, राइट? रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वाला फॉर्म ग्रुप पे शेयर हुआ था, उसके अंदर आप अपनी डिटेल्स मेंशन कर देना, हम वहां से आपकी डिटेल्स पिक कर लेंगे. सेकेंडली, Tilma, can you show that QR again of the courses? तो गाइज, एनी ऑफ यू, अगर आपको इंटरेस्ट भी है एक बार को, हाँ, कि मैं ये कोर्स कर सकता हूँ या फिर मैं अभी नहीं बाद में करना चाहता हूँ ये वाला कोर्स, राइट? देन यू कैन स्कैन दैट क्यूआर. वो क्यूआर भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएगा विद द लिंक ऑफ द फॉर्म, राइट? तो वो, तो आप वो फॉर्म भी भर सकते हो, कि जरूरी नहीं है कि वो आप अभी के अभी वो वाला कोर्स, राइट? दिस वाज, तो आप अभी के अभी वो कोर्स ज्वाइन करो. दैट्स अकॉर्डिंग टू योर फ्लेक्सिबिलिटी. अगर आपको नेक्स्ट सेम में भी करना है तो वो भी हो सकता है. एंड मेक श्योर टू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, बिकॉज आई हैव शेयर्ड ऑल द pros and cons with you. You can also share it with them. The best part is you will get a handwritten notes, as well as the system notes. Plus, this course will be available to you lifetime, all the course modules. And
after the course completion, you will get a certificate as well as the internship opportunity after completing 70% attendance and all the projects during the assessment, right? That's all from my side. Thank you. Okay, thank you, Amit, and thank you all for this to patiently, listening all the points, whatever things we have said here, and especially thank you all the like participants who are like still here, because you all have a kind of patience, which I have said a story called, you know कछुए और खरगोश की जो रेस वाली चीज़ है. सो मेक श्योर आप ऑलवेज कछुआ ही बनो, ट्राई करो पेशेंसली चीज़ें ग्रो ग्रेजुअली ग्रो करने का, नॉट डायरेक्टली, राइट. So that will be like more easy for you and helpful for your life or your career to just grow, in a best manner. And thank you once again, you all, for attending this session. I hope so. Stay connected with us, our community. You will get a perfect same kind of events, as well as good events offline also coming in the next month, or next to next month. A few hackathons we are planning right now, so that also we're gonna do that, as well as few technical workshops also we're gonna organize in offline mode. That also coming in a way, right? So make sure stay connected with us and be updated. Okay, okay. Till then, bye bye. See you, and